So let us find out what is the different percentage of organism which belongs to a particular category, how they are distributed. Are they uniformly distributed, or is their percentage uniform? For example, the vertebrates, there we have fishes, we have amphibians, we have reptiles, we have birds and mammals. So do the percentage of all these 5 categories of the vertebrates are similar or they vary? So first study the invertebrates, the animals. So I have written here animals, invertebrates. So among the invertebrates, it is the insect which occupies the maximum area, which is followed by mollusca or the mollusks, which in turn is followed by crustaceans. Crustaceans are the arthropods only, and rest is occupied by other animals. This involves every other organism in that category. So insects are the most species rich, we can say. And if we take we can say that out of the 7 animals present on the earth's surface, 1 is insect. So the percentage of insect is very, very high. Now let us take the example of the vertebrates. So vertebrates, if we draw the pie diagram, then we observe that the number of fishes here are the maximum. They almost occupy the 50% of all the vertebrates. Then it is followed by the birds, and the birds are then followed by the reptiles, and then lies the mammals and the amphibians. So here the percentage of fish is very, very high as compared to the other one. Rest of them, they are more or less similar, but still the number of the percentage of bird is much higher. Now let us talk about the plants. In the plants, the highest percentage, we consider the fungi also because it has cell here, although it is very wrong to include fungi in among plants. So the maximum number, children, is of fungi on one end, and it is angiosperms on the other hand. Then we have very, very less amount of bryophytes, and we have pteridophytes, and we have algae here, and a very small percentage of lichens are present here. So this is the distribution of the different categories of organism. You have to learn it, and because this pie chart is asked, in the board examination they just draw the pie chart and ask you to fill the type of the organism. So this is about the distribution or the percentage of different organism world. Now let us move on to another point, why the biodiversity is important. There are so many types of organism found on the surface of the earth, and when we talk about how they are related to us or how they are important to us, we can to some organism we cannot assign any function. If somebody asks you what is the importance of mosquito, what is the importance of any rodent which is found in forest for you, we will not be able to establish any relationship, any importance. So what is the importance of those organisms in the world? That's very difficult to define, but we do know that the more diversity is there, the environment is going to be more stable. This has been proved by experimentation. This has been proved by experimentation, and Tillman has given a theory which explains that more the biodiversity, and more will be the stability. और वी कैन रिलेट, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इसका मतलब वो चीज उतना ही ज्यादा बायोडाइवर्स है, जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी इसका मतलब वो एरिया उतना ही ज्यादा स्टेबल है. और इसके अलावा स्टेबल कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वहां पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है. प्रोडक्टिविटी वी हैव स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर, अमाउंट द बायोमास प्रोड्यूस्ड इन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो अगर सपोज 1800 है बायोडाइवर्सिटी, तो 1800 टन्स है तो एक फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी, तो नेक्स्ट ईयर वो जो है वो 1700 हो सकती है, 1900 हो सकती है, बट वो बहुत ज्यादा जो है फ्लक्चुएट नहीं करेगी. तो ये एक साइन है स्टेबल कम्युनिटी का, स्टेबल इकोसिस्टम का, स्टेबल
एरिया का कि उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, डिजीज नहीं होगा वहां पर, पेस्ट रेजिस्टेंस होगा उनमें, कैपेबिलिटी ज्यादा होगी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की। अगर कोई फॉरेन मटेरियल आता है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म आता है, मे बी प्लांट के सीड आते हैं या कोई एनिमल आता है, तो उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो उसको टॉलरेट कर सके, उनको इन्वेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, देन वो रेजिलियंट होते हैं। रेजिलियंट का मतलब होता है कि उनमें रिकवर करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। रिकवर करने की कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं या कोई आउटसाइड फैक्टर आ जाता है, तो उससे उनको जब नुकसान होता है तो उस नुकसान से वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं या एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो एक स्टेबल कम्युनिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्टेबल कम्युनिटी की, वहां पर एक तो वन इज द प्रोडक्टिविटी डज नॉट फ्लक्चुएट मच। नंबर 2, रेजिलियंट होते हैं, वो रेजिलियंट होते हैं, विच मीन्स दे रिकवर वेरी सून। देन थर्ड इज देन दे आर रेजिस्टेंस टू disturbances, minor disturbances. They are resistant to minor disturbances. Then fourth is that they are the foreign invasion does not harm them. उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है